on a troubleshooting topic, and the topic is about the device is not syncing to your phone and vice versa. So, we are going to create a troubleshooting topic using a particular structure. So, first of all, you will decide what should be the title of the topic. Let's write the title of the topic in the chat box. आप लोग अपना अपना टाइटल लिखेंगे सबसे पहले. Ma'am, the topic is Bluetooth. Bluetooth is not syncing. Is that no? Hello? Yeah. Hello, yes. Yes. Okay, ma'am. So Bluetooth is not syncing नहीं आपका. I think it was about your device, like Fitbit device is not syncing with your phone. कुछ ऐसा है मतलब your application. Okay. Your Fitbit device is not synchronizing with your phone application. So this is the main problem. This is the main thing. हमें इतना बड़ा टॉपिक नेम नहीं रख सकते ना. Sometimes title has to be short and self-explanatory. Okay. So and you will talk in the terms of user. Okay. कि user क्या सोचता हुआ आएगा या क्या. So just keep that much. Try to make it smaller. Make it little concise.
हम्म, ठीक है, बेटर है, कैन बी डन अ लिटिल बेटर आल्सो, मतलब आप देखो अगर और हो सकता है तो और कंसाइज करने की कोशिश करो, लुक एट इट अगेन. अच्छा, Mahadev has also fixed Bluetooth syncing issue, but the problem, sh- so when we create a topic for troubleshooting, the topic one should talk in the language of user one, and the other thing is that it should describe what exactly the issue you're talking about. Okay, and you will talk about the main problem in, I mean, it should be clear. Fix Bluetooth syncing issue is not, uh, and please use proper capital letters or whatever you need to write even here in the message. Madhav, are you trying, Abhi? Yeah, you want to share something or should we move forward? Madhav, Soumya, both. Okay. Oh, see, when you're saying fix Bluetooth syncing issue, पहली बात तो Bluetooth नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला. So first of all, it's not a Bluetooth synchronization issue. Bluetooth can be one of the reasons, first of all. I told you initially also that it is not a Bluetooth syncing issue. It is the application is not synchronizing with your Fitbit device. Okay, your phone application is not synchronizing with your Fitbit device. So it is not showing the latest data. Okay. क्या मतलब है सिंक्रोनाइजेशन का कि आपने आज 10,000 स्टेप्स वॉक तो किए बट योर एप्लीकेशन इज नॉट showing that data. You understand? So your device is there with you, you were wearing it properly, and but still, I mean, the device itself is showing that you have taken maybe whatever steps you have taken, but that data is not visible in your application, the phone application. Am I clear about the issue first of all? So it is not Bluetooth syncing issue. Bluetooth को क्या synchronize? Bluetooth is a medium to synchronize the Fitbit device and your application. Bluetooth syncing issue is a vague title. You understand? कोई डाउट है तो पूछो. Am I clear? इससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या चीज सिंक्रोनाइज Yeah. नहीं हो रही है. ओके, राइट. So you can give
unable to sync Fitbit app with device is also fine. Fitbit app is not syncing with device is also fine. आप इनमें से या फिर Mahadev, if you have thought of something else, you can give your idea still. You can share your version and use that in your document. Uh, Ma'am, using enabled word is more user friendly, I guess. Yeah, okay, fine. I said that that is okay only, so you can Yeah, use. Hmm, yeah. you can use that. There can be multiple ways of writing something. So yes, I mean it should be clear. The point is that it should be clear, concise, not very long, and the user should be able to get what you are, what if he's coming to find that issue, he should be able to relate with your title very quickly. Okay, so that is the main purpose, and also it should be the title should be in compliance with your style guide. If there is certain guidelines related to that, that should be followed, and it should also be, of course, parallel to rest of the topics that you are creating in the troubleshooting guide. Okay, so we will take care of all those things. Okay, अब हम next, what is the next level of when we do the troubleshooting, what will be the next line? How will you introduce the issue? There will be a problem statement, right? Okay, so now we will write the problem description in 1 to 2 lines where you will talk about what is the issue that is occurring. What could be the problem? How user is getting to know that the data is not syncing on the, how will he get to know? What are the symptoms here? So we'll start with that kind of problem statement. Okay. So what do you think is the problem here? कैसे पता चलेगा यूजर को? Like we were just discussing कि here it shows 10,000 steps, but in phone application the steps are not visible. Okay, so the latest activity, whatever, latest steps, latest sleep, whatever things are, they are not getting reflected in your application. That's one of the, that can be one of the one of the symptoms and one of the problems that user will see first of all, right? So our topic will start with that. Or maybe if a synchronization time comes over on the top, that when the two devices synced to each other, that time is old and it's not getting updated. So we'll write the problem statement now.
जैसे आपने एक बताया कि अभी 10,000 स्टेप्स वाला आई कैन राइट दैट ऑल्सो. या सो हम कोशिश करेंगे कि वी विल ट्राई टू कवर दीज थिंग्स. एक दो इंस्टेंसेस देंगे क्योंकि हर यूजर को जरूरी नहीं है कि सेम तरीके से ही वो सिंक्रोनाइजेशन इशू को वो स्पॉट करेगा, राइट? तो वी विल ट्राई टू कवर 2-3 इंटेंट्स जो हम लोग सोच सकते हैं. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? वी विल राइट दैट. So what could like last thing the time is old, or maybe the sinking wo spinner आता है that keeps on spinning. These could be the issues, the symptoms that user might be seeing. So he'll write a problem statement. And it will also get a section, like you will give a small title that this is the problem. So problem, the word, or maybe issue, or something like that, so that the user knows that this is the problem statement. So we will write that. Okay, that even the term will be written as this. Maybe I will just share my screen. Okay, तो हम पहले प्रॉब्लम लिखेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे. कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, yes. So now we will write the main issue. प्रॉब्लम लिख सकते हो, यहाँ पे आप इशू लिख सकते हो. Anything, one thing you will write, not all. I'm just showing it. Okay. आप लोग अपना शेयर करिए. So, इस तरीके से पहले आपने सेम चीज को रिपीट किया. The Fitbit app is not syncing with your device.
इट मे बी. सो यहाँ पर हम वो जो अभी सिनेरियोज डिस्कस कर रहे थे कि it may be that you're not able to see your latest data, it or your device, the time is old, the syncing time is old in your application, so something like that. Ma'am left. What? No, no. I just got notified that you left the chat. No, I just stopped sharing, so I think Fosco. I'm here. I just stopped sharing because I'm also writing side by side, so that's why I thought. I'm writing in points. So is it fine or No, I think problem statement you can keep it in a in para? paragraph. Yeah, it will be one or two lines written just like that. And when we will talk about the sim causes, possible causes, then we can go to the yeah, possible causes बताएंगे maybe, or maybe we can ask user to do some quick checks. Okay, in this case, that quickly please check if your Bluetooth is turned on or not, or things like this, right? So all these things, and then we give the solution. Okay, so possible solutions, not. So इसको हम पैराग्राफ में रखेंगे. Hmm? Yes, Soumya. No notifications. हम यहाँ notification की बात ही नहीं कर रहे हैं. And especially, I will not check if there are any grammatical issues or spelling errors, punctuation errors. Please check your thing. I will not respond if you are sending it like this. Check your content before sending.
Come on, let's do it quickly. Yes, what happened? Share what you have written. Yes, yes, sharing just 1 minute. हम्म। महादेव, आपको भी करेक्शन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। करेक्ट करो इसे, जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं, और ठीक करके भेजो। Hello. Yes, yes, Soumya. I have shared mine. Okay. Users are unable to sync the Fitbit app with their devices. The problem includes Bluetooth connectivity issues, inability to track steps, heart rate monitoring not functioning, sleep data not recording, and notifications not synchronizing to the device. Okay. So first of all, let's understand the issue. एक तो ये चीज देखो, users are not unable to Fitbit sync the Fitbit app with their devices. So first of all, हम documentation में usually prefer करते हैं you में बात करते हैं, because user, especially troubleshooting topic में, we are directly talking to the user. Okay.
तो तो उससे ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो यूजर्स के बजाय इट्स बेटर टू यूज यू. Second thing, you are unable to sync the Fitbit. User are unable to sync. नहीं वो, see, it is something that user is not doing it on its own. It is something that happens automatically. Synchronization is not something that user will initiate. You understand? There is no role of user. User is not synchronizing. वो उठा के डेटा इधर से उधर थोड़ी ना कर रहा है, या फिर वो कोई बटन भी प्रेस नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. Your app is automatically supposed to synchronize with the device, first of all. Okay, so thoda sa, let's just understand the issue well first. The Fitbit application is not synchronizing with the device. User is not doing anything here. Okay, user को सिर्फ वो डेटा अपने डिवाइस पे दिखाई दे रहा है, अपनी फिटबिट उसमें दिखाई दे रहा है, डिवाइस पे दिखाई दे रहा है, बट एप्लीकेशन में नहीं दिखाई दे रहा है. दैट इज द मेन इशू. आपने जो बाद में भी लिखा है, द प्रॉब्लम इंक्लूड्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इश्यूज. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इज नॉट अ सिम्टम, इट कैन बी अ कॉज. पॉसिबल कॉज में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आएगा. Inability to track steps, heart rate monitoring, all these things. Inability to track steps नहीं है, आपका डिवाइस पे सब कुछ आ रहा है. Are you understanding the issue? आपके डिवाइस पे वो डेटा दिख रहा है, बट वो डेटा आपकी एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा है. गेटिंग इट? अच्छा. हम्म. लाइक स्मार्ट वॉच में दिख रहा है बट नॉट एबल टू हाँ, ट्रैक यस, यस, यूजर. राइट, राइट. हाँ, तो वो डिवाइस जो है वो आपकी एप्लीकेशन से सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है. ओके. ऑल्सो जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, इट इज शोइंग दैट वी आर ब्लेमिंग यूजर्स समहाउ दैट दे आर नॉट एबल टू, मतलब साउंडिंग लाइक दैट. हाँ, बट यहाँ पे एक वो साउंडिंग लाइक दैट भी है, और सबसे पहली बात तो ये कि यूजर यहाँ पे उसके हाथ में है ही नहीं सिंक्रोनाइजेशन करना. इट्स नॉट हिज जॉब, इट्स नॉट द टास्क दैट ही इज डूइंग. सो मतलब बिल्कुल उससे पहले वाले लेवल पे ही वो रिजेक्ट हो जा रहा है. तो यस, वो ब्लेम वाली बात तो बाद में आती है. पहले तो इट्स नॉट द करेक्ट thing that we are writing. User is not doing that thing. Okay, synchronization happens automatically. Madhav, आप भी अपना शेयर करो वर्जन. Okay, the Fitbit app is not syncing with the device regarding the previous action. So there are no notifications for previous activities such as steps count. This is, मैंने पहले भी बोला, it is not about the notification. It is about the data getting displayed in the application. Okay, notifications नोटिफिकेशन आती है कि आपका अभी इट्स टाइम टू वर्कआउट, इट्स टाइम टू स्लीप, और
maybe something like that. Notifications come in that case. Now here the problem is that device data is not getting displayed in the application. It's there on the device but not in the application. तो सबसे पहला काम तो इशू को समझना ही है. अगर हम वहां पर ही भटक जाएंगे, हम लोगों को अगर इशू नहीं समझ में आएगा तो ओपन करके बात करो. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ओपन करके खाली लिसन सुन रहे हो, साइलेंटली बैठ के क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा. अगर नहीं समझ आ रहा है तो बात करेंगे और पूछेंगे क्वेश्चंस. ऐसे नहीं आपके सामने बैठा है, आस्क व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ डज इट डिस्प्ले बिजी. Ma'am, can I rewrite, ma'am? यस ऑफ कोर्स यू हैव टू रीराइट. इसमें पूछने वाला क्या है? जब अगर वो नहीं पास हुआ है तो यू हैव टू रीराइट.
This call will end in 15 minutes. Join the other link if it does. And let's be faster. You may be unable to sync, not syncing with the device regarding. Okay. You may be unable to sync the Fitbit app with your device. You may not see your device data in the mobile application even though the device records it. The app may fail to synchronize this data correctly. This can prevent normal app device usage mm, and limit your ability to view up to date tracked activities. Okay. आपने इसको रीड किया सौम्या? एक चीज मुझे रिडंडेंट लग रही है, बस वो जो लाइन मैंने लिखी है, द ऐप में फेल टू सिंक डेटा करेक्टली, ये रिपीटेटिव लग रहा है. हाँ. ओके. और चलो इसको हटा दो, अब दोबारा से पढ़ो. You may be unable to sync the Fitbit app with your. I think मैंने यू से तो स्टार्ट कर दिया, बट अगेन इट सीम्स दैट यूजर आप फिर से यू यूजर को, एक्चुअली. हाँ आप यू बोल रहे हो, यू आर अनेबल टू सिंक द फिटबिट ऐप. ये सेम चीज है जो मैंने पहले आपको बोला कि यू मे बी अनेबल, यू ही इज नॉट सिंक्रोनाइजिंग द डेटा. हाँ, सॉरी आई एम रीराइटिंग, सॉरी. यस. मैंने यू लगा दिया, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया. आई एम सॉरी. हाँ. और एक और चीज, डू नॉट यूज सिमिलर थिंग्स लाइक, जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस भी यू से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड सेंटेंस भी यू से स्टार्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा सा ना यू में दोनों में वैसे स्टार्ट हो रहा है, तो वो एक मोनोटोनस सी टोन आती है रीडिंग करते समय. द फ्लो विल नॉट, आपको रीडिंग करते समय ऑकवर्ड फील होगा. सो अगर मैं अभी लॉजिक को छोड़ दूं तो आपको पढ़ते समय लगेगा यू मे बी अनेबल टू डू दिस, यू मे नॉट सी दिस. सो यू नो इट्स नॉट अ प्लेजेंट experience to read. It's not flowing that well. You again and again. So you will have to bring that variation also in writing. So when you're writing, try to write two consecutive sentences in a different way. Okay? थोड़ा सा वहां पर भी ध्यान देंगे हल्का सा. Okay? Just try. Is it correct now? The Fitbit app may fail to sync with device. You may not see your device data in the mobile app even though the device records it. This can prevent normal app device usage and limit your ability to view up-to-date track activities. Okay. एक बार फिर रीड करो. Okay. The Fitbit app. Mm. Mm.
हम्म। चलो। नॉट एबल टू फिगर आउट। इस बार तो मैंने यूजर और यू भी नहीं लिखा है। हाँ, अभी लेकिन कोई बात नहीं, खुद ही देयर कैन बी थिंग्स, अभी इम्प्रूवमेंट ऐसे तो नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी लिखूंगी, मेरे वाले में भी गलती हो सकती है। तो एक बार दोबारा से उसको देखो, रीड करो। क्यों ये हमारी हेडिंग से हाँ, दैट्स ओके, हेडिंग से थोड़ा सिमिलर होगा शुरू में फर्स्ट सेंटेंस। द फिटबिट ऐप में नहीं है यहाँ पे ना, इज फेलिंग टू सिंक लिख सकते हो, पहली बात तो ये। ओके, इट्स नॉट मे। ओके। आई मीन दैट्स एविडेंट दैट ओके, वो उसके बारे में हम श्योर हैं कि अब उसके आगे हम सिम्टम्स वगैरह बाद में बात करेंगे, बट द फिटबिट ऐप इज फेलिंग टू सिंक विद द डिवाइस फर्स्ट। एंड आई रियली वांट यू टू रीड इट अलाउड वंस अगेन, एक बार पढ़ो उसे। The Fitbit app may fail to sync with the device. You may not see your device data in the mobile app, even though the device records it. This can prevent बस इतना normal ही, app. बाकी को छोड़ दो, यही पहले दो सेंटेंसेस में देखो कुछ है। This may prevent. नहीं नहीं, It's मैं फर्स्ट टू सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, थर्ड सेंटेंस को छोड़ दो अभी, पहले फर्स्ट टू you may not सेंटेंसेस में see your बताओ। device, even though the device records it. हाँ, मैंने इसमें यही बताया कि इवन दो द डिवाइस, जैसे आपने बताया कि इट इज रिकॉर्डिंग इन द स्मार्ट वॉच बट इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द डिवाइस, सॉरी द एग्जैक्टली एप्लीकेशन। हाँ, बट इसमें यूसेज ऑफ डिवाइस 3 बार आ रहा है दो सेंटेंसेस के अंदर, देख रहे हो, है रेपिटेशन। कैन यू कट इट डाउन फ्रॉम वन प्लेस एटलीस्ट। डिवाइस यूसेज। मैं डिवाइस यूसेज पे जा ही नहीं रही हूँ, मैं अभी पहले दो सेंटेंसेस में आपको बोल रही हूँ 3 बार आया है, फर्स्ट टू सेंटेंस। डिवाइस विच टर्म? डिवाइस, द टर्म डिवाइस। ओके। The Fitbit app may fail to sync with the device. You may not see your device data in the mobile app, even though the ओके, device records it. हाँ, इवन दो इट रिकॉर्ड्स इट, इवन दो, हाँ Hmm. इट, ओके। It records it. So आप देख रहे हो थोड़ा सा, यहाँ पे एक तो if you say it records it, you don't know because there are two objects here. You may not see your device data in the mobile app. So device data is one, mobile app is one. What are you referring to? What is it? It है क्या यहाँ पर ना, तो ये चीजें क्लैरिटी का पार्ट है आपकी। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यू मे नॉट सी योर डिवाइस डेटा लिख सकते हो, या फिर ट्रैकिंग एक्टिविटी लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट इट इन दी अदर वर्ड्स। ओके, यू मे नॉट सी योर लेटेस्ट एक्टिविटी in the mobile app, even though the Fitbit device, the device is recording it. Okay, yeah, the device has that recording, something like that. डिवाइस तो फिर आगे हाँ, लेकिन एक हटा दिया ना हमने बीच में से, हमने बोला यू कैन मे यू नॉट। प्लीज। हाँ, मैंने डिवाइस डेटा को हटा दिया है, मैंने बोला है यू मे नॉट सी योर एक्टिविटी इन द मोबाइल ऐप, लेटेस्ट एक्टिविटी इन द मोबाइल ऐप, or record of latest activity in the mobile app. Okay, so you can write the same thing in the different way. You may not see your latest activity data in the mobile app, even though the device records it. Let me just type it in. The Fitbit app is failing to sync with the device. You may not see your device tracking data, the
mobile app even though the device record. अभी देखो, फटाफट देखो, कॉल खत्म होने वाला है. हाँ, ओके, आपने भी किया है. The Fitbit app fails to sync with the device. You may not see your latest tracked data in the mobile. May not see your ओके ये मैंने लिखा है, एक्टिविटी डेटा लिखना था, सॉरी ट्रैकिंग डेटा लिख दिया है मैंने, उसकी जगह एक्टिविटी डेटा लिखना था इन द मोबाइल ऐप इवन दो द डिवाइस रिकॉर्ड्स इट. So that will be more simple. Okay, the Fitbit app is not syncing updated data with the linked device. Okay, activity data such as step count, distance covered, and calories appear in the app but not appear in the linked device. Mahadev, ulta hai. It appears in the device but it is not appearing in the application. Okay. Yes, Okay, ma'am. this is better. Okay, this is better. So the Fitbit app is not syncing updated data in the linked device. Is not syncing updated data. Is not syncing the data. लिख सकते हो updated data की जरूरत नहीं है, और maybe latest data लिख सकते हो. Is not synchronizing the data. Simply is not synchronizing data with in the linked device to the linked device. Okay, the Fitbit app is not synchronizing data to the linked device. Is not synchronizing data. Okay, is not a the Fitbit app is not synchronizing updated data with the linked device. पहले तो यहाँ पे ना अंडरस्टैंडिंग की गड़बड़ है. आप बोल रहे हो Fitbit app is failing, इसने लिखा था failing to sync with the device. आप बोल रहे हो is not syncing updated data with the linked device. तो आपकी ना अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ऑपोजिट है. यू आर सेइंग कि एप्लीकेशन I mean, this is not the right way of writing it, basically. The Fitbit app is not synchronizing with the device is one thing, with the linked device. That is one thing. Is not synchronizing data with the linked device is not correct. Okay. So you can say the Fitbit app is not synchronizing. Syncing नहीं लिखते हैं usually. Synchronizing देखा है मैंने, वैसे जब हम ऐसे लिखते हैं is not syncing with the linked device, वो थोड़ा अलग सेंस देता है. Is not synchronizing with the linked device. Updated data को बीच में से हटाएंगे. Activity data such as steps, count, distance covered, and calories burned appear in the device but do not appear in the linked application, in the phone application. Okay, so it is appearing. ये हमारी कॉल अभी खत्म हो रही है. So let's just join the second link. आपको ये बात समझ में आई महादेव? Yes, ma'am. So rewrite and join the other meeting, next meeting. Okay. Okay, this was the one that you Mahadev had posted. The Fitbit app is not syncing updated data with the linked device. I said Fitbit app is not syncing with the linked device. You can simply say that. Okay, activity data such as this, यहाँ पर opposite हो जाएगा. It will be the other way around. So just rewrite and share again, Mahadev. And after this, I will tell you how to write the causes, and I will also show my version.
दिख रहा है आपको? Please read and tell me if you have any questions. द फर्स्ट सेंटेंस सिंकिंग लिखा है, आपने बोला था कि सिंक्रोनाइजिंग होना चाहिए। Okay. Hmm. वैसे तो अगर हम अदरवाइज देखें तो सिंक हम यूज तो कर रहे हैं एज अ वर्ड, इट वी आर यूजिंग दैट, सो probably syncing is correct only, but when you read it, it doesn't sound like you're talking about SYNC. That's the main reason when we read it, it sounds different. Okay, so that way synchronizing, I feel, तो is better. I ग्रामेटिकली तो इट इज करेक्ट। हाँ, Yeah, yeah, yeah. Grammatically, it is correct, but it's just that when you're reading it and we're using our reading aloud as a tool, and so uh, grammatically सिंक्रोनाइजिंग it's इज not incorrect. Huh? It's not incorrect. It's just more preferred word. You can say synchronizing is more preferred. इट्स लुकिंग मोर फॉर्मल आल्सो। Yeah. Yes. Okay. तो अभी हम आगे चलते हैं. What are the main causes of this thing? What are the possible causes? Okay, so you will give it a heading again. What are the possible causes? All right, so yes, what are the possible causes? How will you write that? Let's just first find out what are the possible causes. What do you think are the possible causes? ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपने बताया था, दैट इट Yes. इज अ कॉज। Yeah. ब्लूटूथ नॉट वर्किंग। मैं अभी रफली लिख रही हूँ. These are not the exact way जैसे लिखना चाहिए. I'm just noting down the points. Okay. This is not how we will write in the documentation. We'll fare this out. Okay. उसको फेयर ड्राफ्ट करेंगे. अभी ये ड्राफ्ट ड्राफ्ट है. अभी आप बताइए और क्या रीजन हो सकता है ब्लूटूथ नॉट वर्किंग, या और मे बी ब्लूटूथ इज ऑफ. Yeah, and there's no. Is there any internet issue for this cause? नहीं, Will यहाँ there पर be any internet? no, because the two devices are connecting through Bluetooth, so there will be only one way of connecting ना. या तो वो वाईफाई से कनेक्ट हो रहे होंगे, बट हम कह रहे हैं कि ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है वो, तो ब्लूटूथ से ही दोनों डिवाइस आपस में एक दूसरे से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, तो इंटरनेट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर. The other device may be switched off or not working. That be a cause. हाँ, लो बैटरी या कुछ ऐसा कर सकते हैं.
स्विच ऑफ होगा तो फिर पता ही कैसे चलेगा ना कि किसमें क्या डेटा है। फिर हम देखेंगे ही कैसे कि आउटडेटेड है। ऑन होगा तभी तो यार देखेंगे ना। ये ऑफ हो यूजर के लिए ऑब्वियस है, मतलब हाँ यूजर इज नेक्स्ट। हाँ, हाँ, ऑफ होगा राइट। तो देख ही नहीं पाओगे कि आउटडेटेड है। समझे? है ना? सो लो बैटरी कर सकते हैं कि इफ वन ऑफ द डिवाइस इज ऑन लो बैटरी, तो हो सकता है कि उसकी सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही हो। ओके, लो बैटरी on phone or Fitbit device. Yes, that could be one of the reasons. The Hmm. application updated Sorry, sorry. the app is not updated, Yes, the latest version something. yes, that could also be one of the cause. App not updated. और इसके अलावा हो सकता है कि पेयरिंग में कोई इशू हुआ हो। नॉर्मली होता है ऐसा कि पेयर ठीक से नहीं हुआ है, राइट? ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल कॉजेज। और But भी pairing issue is Bluetooth only, right? नहीं, Bluetooth pairing. ब्लूटूथ इज ऑफ इज वन इशू। ब्लूटूथ दोनों का ऑन है, लेकिन पेयर में भी आपने किसी और डिवाइस से पेयर कर दिया है। समटाइम्स दैट हैपेंस। आप अपने हेडफोन्स के साथ भी हम देखते हैं कई बार वो दूसरे डिवाइस के साथ पेयर हो जाता है। सो पेयरिंग इशू इज हाँ। डिफरेंट। ओके, या पेयरिंग इशू इज स्लाइटली डिफरेंट। And जो application completely running through Bluetooth, it's running offline, मतलब बिल्कुल भी network usage नहीं है। नहीं, नेटवर्क यूसेज होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, नेटवर्क यूसेज नहीं है। नेटवर्क यूसेज होगा, लेकिन जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है फ्रॉम डिवाइस टू, दैट इज हैपनिंग थ्रू ब्लूटूथ। okay, so we cannot write any network नेटवर्क concern प्रॉब्लम, over here. हाँ, यहाँ पे वो इंटरप्ट नहीं करेगा। नेटवर्क इज नॉट प्लेइंग अ रोल इन दिस पर्टिकुलर थिंग, Synchronization with इन the thing. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा। यस, Okay. ओके, Hmm. या सो दीज आर द पॉसिबल कॉजेज। ब्लूटूथ इज ऑफ, लो बैटरी ऑन फोन। अब आप इसको फेयर आउट करके लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। हाउ विल वी राइट इट? विल जस्ट डू दिस मच। अभी अभी हमारा मेन पार्ट तो रह गया है, सॉल्यूशंस तो हमने लिखे ही नहीं है अभी नीचे वाला पे। बहुत टाइम लगा रहे हैं हम लोग। थोड़ा फटाफट करेंगे, जल्दी से बताओ ब्लूटूथ पॉसिबल कॉजेज क्या हैं। इसको कैसे लिखेंगे? ब्लूटूथ इज टर्न्ड ऑफ, नेक्स्ट लो बैटरी ऑन फोन और फिटबिट डिवाइस, दिस इज फाइन आई थिंक। ऐप नॉट अपडेटेड, इसको भी ठीक से लिखना चाहिए हमें। Use the updated version. क्या लिखेंगे? Use the updated version. पैरेललिज्म कहाँ गया? आगे कहीं पे हमने बाकियों में अभी हम वर्ब्स नहीं यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें भी नहीं करेंगे। या टेल मी व्हाट अदर ऑप्शन? प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे ना, जैसे हमने यहाँ लिखा है ब्लूटूथ इज टर्न्ड ऑफ। और अनस्टेबल भी लिख सकते हैं। ऐप इज नॉट
अपडेटेड ऐसा लिख सकते हैं और मे बी वी कैन To the राइट latest version or हाँ updated. हाँ ये भी लिख सकते हैं थोड़ा और इसको कंसाइज भी कर सकते हैं मे बी इस तरीके से आई एम जस्ट राइटिंग इट both of them to for you to compare outdated app version तो ये देखो कितना छोटा हो गया उससे but it is conveying the same sense right कौन सा रखेंगे कौन सा रखेंगे ऊपर वाला कि नीचे वाला नीचे वाला भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं, बट हाँ तो आई इसमें हम थिंक हाँ बोलो दोनों ही यूजर फ्रेंडली है, दोनों ही लग रहा हाँ है तो यूजर फ्रेंडली। कंसाइज मतलब आपका जो एसेंस है वो आगे कन्वे हो रहा है राइट यू आर एबल टू कन्वे व्हाट यू वांट टू से so you'll always choose a shorter option if you're and you will also make sure that it is पैरेलल अब यहाँ पर इधर पैरेललिज्म हमारा जा रहा है ये देख रहे हो ये यहाँ पे है ना इस तो जैसे हमने लो बैटरी ऑन फोन आउटडेटेड ऐप वर्जन ब्लूटूथ टर्न्ड ऑफ यस और अनस्टेबल सो हम सबको एक ही तरीके से लिखेंगे ओके पेयरिंग और कनेक्शन इशू अब इसके बाद आप लोग सीधा आप इसको एक्सप्लेन करने पे आगे जा सकते हो और लाइक यू कैन give solution 1 check the bluetooth issue and you will give check the bluetooth connection and you will give the steps okay so यहाँ पर आपका अब solution start हो जाएंगे solutions और possible solutions right and यहाँ पर आप आगे करोगे solution 1 ब्लूटूथ के बारे में हमने पहले लिखा है तो आप एक ये बता सकते हो चेक ब्लूटूथ सेटिंग ओके अब यहाँ से आप अपना उसके स्टेप्स दोगे हाउ टू स्टेप्स बेसिकली कि आप ब्लूटूथ को चेक कैसे करोगे सो दैट यू कैन राइट ओके तो सीधा आप यहाँ पे स्टेप से शुरू कर सकते हो कि ओपन योर दिस phone's Bluetooth settings or whatever you can start from there and इससे पहले before possible solutions you can also give a small chunk of before you begin quick checks before you begin वो हर केस में जरूरी नहीं है वो but here it is possible that the issue can be resolved with a quick check okay so before we give detailed solutions we ask them to check a few things for example ensure the Bluetooth is on right इसी तरीके से और चीजें ensure the device the two devices are close to each other क्योंकि अगर कई बार दूर होते हैं तो भी ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं होता है राइट इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पशंस जो क्विक चेक्स हैं वो बता सकते हैं यूजर को नॉट लाइक ऑल ऑफ देम यू हैव टू गिव या हर बार क्विक चेक्स होंगे ही ऐसा भी जरूरी नहीं है दिस इज एन ऑप्शनल सेक्शन बट इन दिस केस
इट इज देयर। ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है, सभी सेक्शंस के बीच में बराबर बराबर स्पेस रहेगा। वी विल मेक श्योर ऑल द पॉइंटर्स विल फॉलो पैरेललिज्म। अगर हम वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं या उसमें सेंटेंस में ज़्यादा वर्ड्स हैं तो हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। Similarly, there can be more pointers like your Fitbit device or phone has enough battery or all these things. So ये चीज़ें हम चेक करवा सकते हैं, यूज़र को बोल सकते हैं that you can check. So you can build the list like that. इसके बाद possible solutions क्या क्या हैं बताएंगे फटाफट से, फिर हम उनको डॉक्यूमेंट करेंगे। इसके बाद what are the possible solutions? One is check the Bluetooth settings. राइट, अगर किसी को नहीं मालूम है, सिंपली यहाँ से अगर नहीं पता चल रहा है ब्लूटूथ इज टर्न ऑन और व्हाट, वी आर गिविंग स्टेप्स हियर। ओके, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, अदर सॉल्यूशन टू दिस? और क्या करते हैं हम यूजुअली? डिवाइस रीस्टार्ट करवाते हैं कई बार, रीस्टार्ट द डिवाइस, अपडेट द एप्लीकेशन वर्जन, वो होगा, राइट? आप देखिए बैटरी चार्ज है हाँ नहीं। हाँ, रिचार्ज द फोन, रिचार्ज द बैटरी, या पेयरिंग दोबारा करो, रिपेयर repair the Fitbit device, like pair the Fitbit device again, right? So these are some of the things that will come. So you will give solution 1, solution 2, solution 3, इस तरीके से you will be giving the solution. किसी केस में हो सकता है कि एक ही सोल्यूशन हो, जरूरी नहीं है कि सब में मल्टीपल सॉल्यूशंस हो। ओके, जहां पर आप शॉर्ट हो कि हाँ क्या सोल्यूशन है, यू कैन गिव दैट। ओके, and at the end you will write the expected result. So after completing these steps, you can write like that after. So यहाँ पर ये एक्चुअली इसमें नहीं आना चाहिए, पहले जैसे लिखा था वैसे ही लिखेंगे। जब आपने ये दे दिया है, some information you have given here, okay, all the steps and everything, last में all solutions, after all solutions have been given, you can say after completing these steps or your latest activity data maybe should be visible in your application. So I'm just telling you the format कि ट्रबल शूटिंग टॉपिक को लिखा कैसे जाता है। ओके, तो आप लास्ट में उसको खत्म करवाओगे वहां पर, एंड योर लास्ट सिंक्ड आता है ना, लास्ट सिंक्ड लिखा हुआ आता है, टाइम शुड बी अपडेटेड, कुछ इस तरीके से। मतलब आप एक सिग्नल बताओगे कि हाउ डज द यूजर कंफर्म कि उसका इश्यू रिजॉल्व हो गया है। सो आउटकम बताएंगे हम, वी विल टेल द आउटकम, व्हाट विल हैपन आफ्टर कैरिंग आउट दीज स्टेप्स। ओके, एंड देन इफ द इश्यू परसिस्ट, उसका एक अलग से सेक्शन बनाओगे आप कि अभी भी अगर आपका इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो क्या करना है। ओके, सो इन दैट केस what will you do? You will maybe uh, कॉन्टैक्ट द हेल्प सेंटर और contact the help center, restart your phone as well। मतलब कुछ जो चीजें आपने अपनी डिवाइस के साथ करानी थी या एप्लीकेशन के साथ करानी थी वो करा लिया। मे बी रीस्टार्ट द फोन अगर ऊपर नहीं लिखा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यू कैन ट्राई रीस्टार्टिंग द फोन, यू कैन कॉन्टैक्ट द हेल्प सेंटर, और या और री इंस्टॉल द फिटबिट एप्लीकेशन, और उसका लिंक दे सकते हो कि कहीं पे आपने इंस्टॉलेशन का टॉप वो दिया होगा, इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन का, uninstall and install the Fitbit application।
अगेन, इस तरीके से करके आप उस पर लिंक बना सकते हो. सो यू अंडरस्टैंड. अनइंस्टॉल एंड इंस्टॉल द Fitbit application. ओके. सो व्हेन दिस हैपेंस, तो यहाँ पे आप अनइंस्टॉलेशन के स्टेप्स अगर आपने कहीं पे और किसी टॉपिक में दे रखे हैं, जो कि आपने दिए होंगे कहीं ना कहीं आपके हाउ टू टॉपिक्स में, उसका लिंक, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ फिटबिट एप्लीकेशन का लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हो. ठीक है, इस तरीके से. और कॉन्टैक्ट द हेल्प सेंटर. अब यहाँ पे भी जब आप कॉन्टैक्ट द हेल्प सेंटर बोलोगे, तो आप हेल्प सेंटर को कॉन्टैक्ट करने का लिंक या जो भी डिटेल्स है वो दोगे. ओके. तो यहाँ पर वो लिंक ऐड किया जाएगा. ओके. सो ये हो गया आपका ट्रबल शूटिंग टॉपिक का स्ट्रक्चर. I have a question. यस प्लीज. When we are writing quick checks, the first line ensure the Bluetooth is turned on. अगर हम possible solution में लिख रहे हैं check Bluetooth settings, तो ये repetitive नहीं हो रहा. Like we are already writing the same thing. यस है, थोड़ा रेपिटेटिव है वो हम वी कैन सी दैट. मतलब अगर आपको लग रहा है रेपिटेटिव, यहाँ से हटा सकते हो. बट इट्स जस्ट दैट कि अगर किसी को नहीं मालूम है कि ब्लूटूथ कैसे ऑन करना है, तो हम फिर भी सोल्यूशन दे रहे हैं कि सो दैट दे कैन गो एंड चेक ब्लूटूथ सेटिंग एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, की आप यहाँ से जाओ और चेक कर लो, या फिर पेयरिंग चेक कर लो, उस तरीके की चीजें. यस, So quick check इट is इज not रेपिटेटिव. always sorry. So quick checks is not always necessary to write, या but we can. हाँ हाँ, तो तभी मैंने वो बाद में लिखा ना हमने क्विक चेक. अगर आप पॉसिबल सॉल्यूशंस में दे रहे हो, आप वहाँ पे छोड़ सकते हो, क्विक चेक से हटा दो. बट दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट यूजर वुड लाइक टू. यूजुअली ज्यादातर यूजर्स को पता होगा, तो हम उसको क्विक चेक्स में रख सकते हैं, ब्लूटूथ टर्न ऑन है या नहीं है. एंड मे बी Okay. यू कैन रिमूव इट फ्रॉम द स्टेप्स बिलो. सो यू कैन चूज either of them. ओके. तो वो तभी मैंने कहा था कि क्विक चेक वाला जो सेक्शन है ये ऑप्शनल है, और सब केसेस में होगा भी नहीं. जरूरी नहीं है सब केसेस में क्विक चेक्स हो एंड थिंग्स लाइक दैट. ऑलराइट. एनी अदर क्वेश्चन? सो ये आपका बन गया ट्रबल शूटिंग का टॉपिक. महादेव, आप हो कर रहे हो हमारे साथ, हाँ, या कोई क्वेश्चन है? ना मैम. समझ में आया? आपको इश्यू आ रहा था ना ट्रबल शूटिंग टॉपिक लिखने में, मेरे ख्याल से इस मैम. लास्ट टाइम यू हैड आस्क्ड. अब कुछ समझ आया किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, हाउ विल बी राइटिंग? Yeah, I understand. Yeah, and before you do that, you need to understand the exact issue. अगर आपने ही issue को गलत समझा, तो आगे कैसे समझाएंगे ना? How will we make the user understand? So be careful that you understand the right issue. Okay? Sometimes the Okay, ma'am. details are very minor. There is a very minor difference in what बहुत ही subtle सा difference होता है, और हम उसको notice नहीं करते हैं. But it is important Okay, to ma'am. identify the issue correctly and mention it correctly. Okay? Okay, ma'am. All right. Chalo. So I hope it helped, and let me know if you have any further questions. Try to complete it and share it in the group. Okay? So that आपका एक topic ready भी हो जाएगा इसके माध्यम से, मतलब, and you will also get to know
what issues you are facing, where you are lacking, and you'll be able to get the feedback as well. Okay, नहीं करोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा. It's only up to you. How much do you want to learn? Okay. All right. Thank you so much.